Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Everybody, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, this is entrepreneurship and leadership. Today's topic is product quality and design. After long discussion of marketing aspects, now we will discuss how we can maintain our quality and design of the product. Before quality, we have to emphasize on our design of the product, that is most important. Such design, the customer do not like it, that kind of product is not need to manufacture it. ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर को पसंद नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. So what kind of design the customer will like it, we have to study today. किस किस्म का डिज़ाइन कस्टमर को चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिज़ाइन which we make in our industry or in our department or in our manufacturing industry. Product design ऐसा होना चाहिए, everybody like it, customer will like it. Always think before send your product into the market, your design should be very competitor, should be very famous in the market. It should be a very different product. Those designs will like by the customers. If you same thing send to the market, अगर आप सेम चीज मार्केट में भेजते हैं, then the customer will think this product is always present by the other manufacturer, so why should I buy this product? I think you got my point. The product design should be different from all kind of manufacturers. मैं एक टी शर्ट पहन रहा हूँ, why should I use bonanza t-shirt? I feel comfortable. It should be washed after 3 days use. 3 दिन यूज के बाद मुझे वॉश करना पड़ता है. बट द अदर प्रोडक्ट्स I can only use 1 day or 2 day maximum. So I will use the Bonanza t-shirt because the washing date after 3 to 4 day of use. So the product design, the product manufacturing is most important in your field. As a technical engineer, as a electrical engineer, in your future, as a professional life, after engineering, you will in touch with every technical product in your whole life.
So the product design should be like that, the different, the comfortable, the customer will like. So we will discuss today in detail. Product design hai kya? What is product design? The product design is a process of creating a new product to be sold by a business to its customer. ऐसा process है ये एक product design का, जो आप एक नई प्रोडक्ट अगर बनाने जाते हैं और अपने बिजनेस में कस्टमर को सेल करने के लिए, तो उस प्रोसेस से गुजरना जिसमें वो नया प्रोडक्ट बने और आपका प्रोडक्ट आपके बिजनेस से निकलकर कस्टमर तक पहुंचे और वो उसको पसंद करे कि वाह क्या प्रोडक्ट बनाया, व्हाट अ प्रोडक्ट द कंपनी मेड इट. It is essential the efficient and effective generation and development of ideas through a process that leads to the new product. When you make or when you start or when you start the manufacturing of the new product, it should be efficient. ये ज़रूरी है, it should be efficient, it should be very effective. It, the idea which you develop in your mind, the customer will see, then he gives the comments, wow what a product. So आपकी उसकी बनाने की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उसके आइडियाज which you develop, what kind of process you will use to make that kind of product, it should be very efficient and very effective way. So this is the product design. Why product design concept used? हम इस प्रोडक्ट डिजाइन के कंसेप्ट को क्यों यूज करते हैं? Because we want maximum profit to earn by our business. Everybody who is concerned with your manufacturing industry want to earn maximum profit in the long run. So the product design should be different from the other parties, then you can get profit maximum in a long run. Upgrade desired product quality. Yes, of course. Whatever different products are placed in the market, you will produce very much upgraded product quality, then the customer will buy it. If you cannot upgrade that kind of product, the customer will not like it and you can very much disturb. So reduced development time and cost to minimum. Yes, of course, because I want and you want maximum profit. So you will use the minimum time to develop it. If you use the maximum time to develop it, you will use maximum energy, maximum cost, and you will get minimum profit. So the during the development time of that kind of product, it should be, keep in your mind, the product time should be very less and the cost obviously we want in the minimum way. Ensure producibility or manufacturability. Whatever you have designed, whatever you have a idea in your mind, I will use and I will make this type of design, can I produce by my manufacturing company? ये ना हो कि वो जो डिज़ाइन आप फैसला करें उसको आप कंपनी के अंदर बना ही ना सकें, आपके पास मशीन ही ना हो, आप प्रोड्यूस ही ना कर सकें. तो it should be ensured before starting the that kind of product, whatever you have decided the design. मैं कहूँ जी मुझे ज़रा बड़ी सॉफ्ट और इतनी अच्छी कस्टमर को ये टी शर्ट मैं बना के दूँ कि वो जनाब कभी वॉश ही ना करनी पड़े, लोग उसको झाड़ें हाथ से तो वो सारे डस्ट उतर जाए.
it is not possible. You cannot produce. So कोई ऐसी एलसीडी याद करें कि शायद दुनिया में आ चुकी हो, बट मैं वैसे ही एक जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू अबाउट द एग्जांपल कि मैं आंख के इशारे से चैनल चेंज कर लूं, हो सकता है शायद आ भी जाए या आ भी चुके हों। तो बट मेरी इंडस्ट्री जो एलसीडी बना रही है वो तो बाय रिमोट ऑपरेट होती है, बट आप उसको आंख के इशारे के साथ कैसे चैनल मूव कर सकते हैं। सो इट should be ensured what kind of producibility or manufacture. You can't do that. Otherwise, the development process, which you have already too much time to produce that kind of product, which will take maximum cost. So it should be ensured the before producibility that kind of product can produce by my industry or not. So these are the 4 points which keep in your mind about the concept of your product design. Profit, we want profit maximization. Yes, of course, you should uh, send out the product, upgraded product. You should use development time by the reducing cost and the reducing time, and before making that kind of product, it should be ensured that producibility or manufacturability. These are the other factors which can affect your product. One by one, we will discuss the customer requirements, production facilities, raw material to be used, cost of price ratio, quality policy, plant and machineries, effect on existing products, reputation of the company. So when we talk about customer requirements, what the customer required, what the customer want, what the customer need, then we will make that kind of product. कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या ज़रूरत है, कस्टमर किस चीज़ को लाइक करेगा, हमें वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। अदरवाइज आप अफेक्ट होंगे। दीज आर द फैक्टर्स। क्योंकि अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर नहीं रखेंगे, वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, वट एवर यू आर रनिंग अ बिजनेस, you will seriously affect. So the customer requirements is the top priority. Production facilities, yes, whatever you have in your mind, I will produce, I will make this type of product. Have I these facilities in my industry to produce this type of product? So you will check the production facilities in your industries. If this is the final product which I will produce, I have these type of production facilities. Yes, you have to check. So customer requirement के साथ साथ आपको फिर उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी चेक करनी पड़ेंगी कि आप उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. So whatever the product you have finalized, you will check the raw material. I can buy, the market can give me easily, मुझे उसको import करना पड़े. तो the imported material cost very high much. So the whatever you raw material will use for that kind of product, you have to check that the raw material is available, easily available or not. So the fourth one is the cost to price ratio. Yes, the customer obviously customer likes the excellent product. So if you make and you if you check in your R&D department, please check this type of product we can produce easily or not. Please check the price of the process. When you start this product in the bulk quantity, you have to very much concern about your cost. So if the cost is high, the price will
obviously very much high, because the cost is 10 rupees. You will take the margin 50% of the product, so you will sell, or you will set your its price is 15 rupees, but it's the cost is 20 rupees. You have to put the value of price around 25 and 26, 27. So the cost to ratio, price ratio, you have to check before starting the bulk quantity production. So these are the quality of design. Whatever you have decided, I will produce this type of product. So you will check, obviously, quality policy. You will make quality policy, because I am going to start this type of product in my industry. I have to make the quality policy to produce these products uh, in the same way. So similarly, we will also check our plant and machinery. That plant or these machinery are feasible to produce this type of design product. You have to check. Similarly, effect on the existing products. Yes, whatever you are producing, maybe you are producing same type of LCD, same type of T-shirt, whatever you are producing. If I will make this kind of product, this product which affect to my existing products or not, यो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मैं नया प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, ये कहीं दूसरे मेरी प्रोडक्ट को तो नहीं इफेक्ट करेगा। ये ना हो कि इसकी सेल भी थोड़ी सी डाउन हो जाए और इसकी वजह से दूसरी भी डिस्टर्ब हो जाए, या ये चीज़ बिकनी शुरू हो जाए और मेरे दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो दूसरी चीज़ें बन रही हैं वो बंद होना शुरू हो जाए। तो यू हैव टू द अफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ड्यू टू न्यू प्रोडक्ट डिजाइन। Similarly, reputation of the company, that is most important. If you fail to make or produce this type of product, the customer will not like you and your reputation will down. So these are the most important factors when you produce new product design. You have to concern about all factors. These are very much important in the technical field. So if you are working, if you are doing a job in any way, in any industry in Pakistan or all over the world, as a department head, if you decide by the general manager order, if we will make a new product for this industry, so you have to concern about all the factors which we have discussed. I hope you understand what I want to say you. So, what are the steps in the product designing? That is the most important, which we discussed, just discussed about the factor of the product design. Now, we will discuss about the product designing. So, first, you have to get together and create the idea which type of product we should make, the customer will like it. तो द कस्टमर एंड द कंपटीटर रिसर्च, यस, आप कस्टमर के पास जाएं, आप दूसरे कंपटीटर्स को देखें कि व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, कस्टमर व्हाट दे वांट, कस्टमर क्या चाहता है। द आइडिया जनरेट करें। घर बैठ के आप अपना आइडिया नहीं लगा सकते, ऐसे आइडिया बनाएंगे कि जी जो बाद में लोगों को पसंद ही ना आए, दैट इज नॉट गुड। सो आइडिया जनरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट टुगेदर and make the decision who will go outside, who will discuss with the customer, who will discuss with see the all competitors, कि रिसर्च करे कि हमारे जो competitors हैं जो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, हमें किस तरह एक आइडिया, नया आइडिया लेके मार्केट में आना पड़ेगा। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सब मीटिंग्स कॉल करें, कस्टमर से सारा डाटा इकट्ठा करें, मार्केट में कौन कौन से कंपिटिटर्स हैं who are already working on it, who are already making that kind of product. So this is the brainstorming session, जहाँ आप बैठ के सोचते हैं हम किस किस्म का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। आप सर्वे करते हैं कि अगर आपको इस प्रोडक्ट में जो भी कंपनी बना रही है उसमें क्या क्या खामी है, तो कस्टमर आपसे
डायरेक्टली तो नहीं आपको बताएगा, लेकिन जब सर्वे आपके पास आता है बाहर मार्केट में, तो कस्टमर बताता है कि जी फलां कंपनी का जो ऑर्डर वो प्रोडक्ट है, वो उसमें ये खराबी है। तो आप फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ठीक है, कस्टमर की ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको हाउ टू अवेल एंड हाउ टू रिमूव दीज टाइप ऑफ एरर्स इन दिस प्रोडक्ट आई विल प्रोड्यूस। तो उस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आप सर्वे का सारा रिजल्ट सामने रखते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो बाहर दूसरी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे लाइक। तो we should remove the negative points of this products, then we can easily generate a new idea. The customer input research and development team, yes of course आप कस्टमर से इनपुट भी लेंगे, सर्वे करवाएंगे, फिर आपकी जो जो रिसर्च R&D की जो टीम है वो इकट्ठी होकर बैठी होगी, फिर आप एक नया आइडिया जनरेट करेंगे कि जी इस किस्म का प्रोडक्ट होना चाहिए। मार्केट में हमने सर्च किया है कि इस कस्टमर को ये इस किस्म का प्रोडक्ट पसंद है। कस्टमर हमारे जो कंपटीटर्स हैं, जो हमारी किस्म के हमारे जैसे काम कर रहे हैं, जो दूसरी एलसीडी दूसरी कंपनीज बना रही हैं, उनमें ये खराबियां हैं, तो कस्टमर जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो देन वी कैन इजीली जनरेट द आइडिया। नाउ after that generate the idea, we have to screen our concept, okay, we are going in a right way. Is there a real clearly defined customer need or want to for this product or service? Yes, ये जो आइडिया जनरेट हुआ है ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल क्लियर है। ये एक कस्टमर ने डिफाइन किया है, उसको किस किस्म की प्रोडक्ट की नीड है, उसको किस किस्म की सर्विसेज की इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको वो कंसेप्ट अपना स्क्रीनिंग से गुजारना है। कैन वी फुली डेवलप दिस प्रोडक्ट और सर्विस? यस, यू विल सी in your manufacturing process, can we produce this type of product in our industry? This is the fully developed product, so you have to check in your industry, so can we produce or not? Is the profit potential of for this product large enough to justify its development? If we are going to develop a new product, it will give us that profit potential or not? क्या ये हमें प्रॉफिट देगा भी या नहीं देगा? ये ना हो कि मार्केट में वो कस्टमर को हमें महंगा बेचना पड़े और उसको कोई खरीदे ही ना बाद में। तो दैट इज नॉट ए गुड सीन फॉर अस। तो कंसेप्ट जो भी आप जनरेट करें उसकी स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। Competitive analysis. Best of ideas are incorporated to mitigate any competitor advantage. ऐसा आइडिया जो आपने बनाया उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि जो आइडिया आप जनरेट करना चाह रहे हैं, अगर उसमें आप 80% कामयाब हो गए हैं, फुलफिल सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आपका जो कंपटीटर है हो सकता है जब प्रोडक्ट लॉन्च हो मार्केट में वो उसका फ़ायदा उठाए और 20% जो रह गया था वो उसको फुलफिल कर दे। तो बेस्ट ऑफ आइडियाज जो है वो जो आप इनकॉर्पोरेटेड करने जा रहे हैं उसको मिटिगेट करना। मिटिगेट का मतलब ये है कि आप उसको बिल्कुल खत्म करें। यानी जो 20% है, जो आप समझ रहे हैं कि जी मैं अभी फिलहाल लॉन्च तो करूं, उसके बाद जो 20% गैप रह गया है उसको खत्म करूंगा, तो उस चीज को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर वो 20% से ज्यादा है, जैसे ये ऑरेंज कलर का जो आपको शो हुआ कि जी वो साइड पर हो गया, बाकी तो इकट्ठे हैं प्रोडक्ट और बाकी हमारे प्रोडक्ट की हर चीज ठीक है, हर पार्ट्स इस प्रोडक्ट के ठीक हैं, बट ये जो ऑरेंज कलर का है ना ये थोड़ा सा साइड पर क्यों जा रहा है, ये हमें डिस्टर्ब करेगा। So that is most important analysis which you are conduct in after generating the idea. Verify buyer market size for similar offering to validate development investment. आप मार्केट साइज में जाके देखें कि अगर वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकने वाला है और बायर जो खरीदेगा उसको, वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि ये इस किस्म की जो आप ऑफर दे रहे हैं वो सेम हमें किसी दूसरी जगह से भी मिल रही है, तो हम आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदें। तो जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें मार्केट में, जरूरी नहीं आप ही काम कर रहे हैं, और कंपनियां भी इस पॉइंट पर काम कर रही होती हैं। जैसे आप ही लॉन्च करती हैं, जैसे अक्सर हमने यहाँ पर टीवी में देखा होगा कि ये जो नेटवर्किंग वाली कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप और मैसेजेस और कॉल के पैकेजेस देती हैं, एक
एक पैकेज आता ही है तो साथ ही यू फोन वाले भी आ जाते हैं, साथ ही जैज वाले भी आ जाते हैं, साथ ही पैकेज की अनाउंसमेंट के लिए वारिद वाली कंपनी भी अनाउंस कर देती है। तो ब्लॉक कम्पिटेटिव एनालिसिस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर फिर शुरू करते हैं कि जी ये चीज़ हमारे से ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं होगी, हम जो बायर हमारे से प्रोडक्ट खरीदेगा वो उस चीज़ को वेरीफाई करे कि दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, द पब्लिक विल लाइक इट, द कस्टमर विल लाइक इट। So that is the competitive analysis you have to do before launch your product. Then you will start your commercialization. Yes, you will start its production, you will start your industry. Then this is the high scale you can launch, and you have to start your production. That is the finalized for us. So then finally you will start commercialization और प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यहाँ तक आपका है कि जी कमर्शियलाइजेशन से पहले पहले आपको डिज़ाइन को किस किस सीन से गुजर के जाना है। अब मैं आपको जस्ट एक विद इन 5 to 6 मिनट एक एग्जांपल शेयर करूंगा। जैसे ये एप्पल आईफोन एक मोबाइल है, दिस इज द फोन एप्पल मोबाइल आईफोन, एवरीबॉडी शुड नो, सबको पता होगा माशाल्लाह। ठीक है जी, ये कंपनी के 3 ऑनर्स हैं जो जब एप्पल आईफोन का कोई नया फोन लॉन्च करते हैं तो क्या कुछ करते हैं, जरा सोचें जरा। ठीक है जी, ये एक बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में से गुजरते हैं कि जी कौन सी हमारी रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी या कौन सी कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी। कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी वो है जो जिसको हम यूज कर सकते हैं, और जिसको हम नहीं यूज कर सकते, जो हमें बाद में डिस्टर्ब करेगी, कस्टमर लाइक नहीं करेगा हमारी प्रोडक्ट को, वो कहेगा जी ये बड़ी रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज की है इस दफा इन्होंने, पता नहीं किस किस्म की बॉडी बना दिया है या किस किस्म का इसका टच बना दिया है, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो वो लोग इस चीज को बहुत गो थ्रू होते हैं। मुख्तलिफ कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो किसी भी मोबाइल बनाने की, ठीक है जी, उसमें फ्लैश मेमोरी है, उसमें डिस्प्ले है, टच स्क्रीन की चार्जेस हैं, प्रोसेसर है, सेंसर है, कैमरा है, सेलुलर रेडियो है, वायरलेस रेडियो है, बैटरी है, पावर मैनेजमेंट है ऑन ऑफ करने के लिए, मैकेनिकल पार्ट्स भी कुछ होते हैं बीच में छोटे छोटे, पैकेजिंग है, प्रोडक्शन है, फिर उसकी लाइसेंसिंग फी है। तो टोटल कास्ट इज 22 to $6 होती है, जो कि पाकिस्तान में आके जो 40-45 बन जाती है। तो ये तो थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऑन द लेफ्ट साइड यू आर लुकिंग, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो ऑपरेट करने के चार्जेस हैं, यानी वहां पर प्रोसेसिंग हो रहा है और वहां पर लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो उसकी जो पर पीस कॉस्ट है वो कहते हैं जी $61.18 है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट $18.85, यानी उसको बनाने के लिए, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए $18.585 आपको लगे। एंड सॉफ्टवेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉफ्टवेयर जो उसमें लॉन्च किया या उसमें जो सेटिंग की सॉफ्टवेयर की, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो 42.33 है। दैट इज द टोटल कास्ट, वो $61 बनती है। फिर उसके बाद उसने लिखा है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी जब आप सोच लेते हैं कि हम इस किस्म का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ऐसा मोबाइल बनाएंगे जो इंशाल्लाह मार्केट में पसंद आएगा, लोग उस चीज को लाइक करेंगे, तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, वो फिर आपको पुट अप करनी पड़ती है कि जी जिसी तरह आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो जनरल मैनेजर आपको बुलाएगा कि जी हम ये एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, आप जरा उसकी मुझे एस्टिमेट कॉस्ट बना के बताएं कि ये कितने में हमारा हमें पड़ेगा। तो उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब 226 यानी डॉलर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, और जो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखा है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने $61 डाल दिए। उसके बाद उन्होंने तीसरी चीज और ऐड कर दी है, होल सेलर एंड रिटेलर मार्कअप, यानी आपने जिन रिटेलरों के थ्रू, जिन शॉपकीपर के थ्रू वो मोबाइल बेचने हैं, उन्होंने भी तो ट्रेवलिंग चार्जेस, उनके अपने शॉप्स के चार्जेस भी डालने हैं, वो उन्होंने $68 डाला है। और फिर टोटल कॉस्ट बनती है 356.93, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा ऑलमोस्ट $125 आपको एस्टिमेट कॉस्ट और दूसरे ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिर सॉफ्टवेयर कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ती है।
खाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होती। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो कि $18 उन्होंने डाली है पर पीस, ये हर प्रोडक्ट के पीछे वो लेते हैं। तो एप्पल वाले ये काम बहुत क्योंकि ये बड़ी अच्छी कंपनी है। अब ये देखें, इस वक्त उन्होंने कहा है कि R&D कॉस्ट ऑफ $US 150 million, टोटल कॉस्ट पर पीस। अब पीछे हमें डिसाइड हुआ 356.93, टोटल कॉस्ट पर पीस कितनी पड़ी, $356 की। रायता बनाया और टोटल पर पीस जो है वो, बेटा माइक ऑफ रखें प्लीज। शुएब, प्रॉफिट पर पीस 242, और सोल्ड 6.1 मिलियन फर्स्ट जनरेशन आईफोन, यानी उन्होंने 60 लाख फोन पहली जनरेशन में सेल किए। और जिस पर उनकी R&D कॉस्ट आई थी $150 million। तो जब आप R&D करते हैं 150 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन होता है $10 लाख, और 150 मिलियन का मतलब है 1.5 अरब रुपीज। इतने अरब रुपए उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज में R&D की। और उस फर्स्ट जनरेशन के लिए 60 लाख फोन बनाए जो उन्होंने सेल किए बाय द एंड ऑफ 2010, जो कि ऑलमोस्ट 2010 के आखिर तक 73 मिलियन, यानी 7 करोड़ और 35 लाख फोन वो बना के बेच चुके थे। दीज आर द डिफरेंट एवोल्यूशन ऑफ आईफोन। 412 आया पहले, ARM11 कहते थे उसको, फिर ARM कॉर्टेक्स आया, 1 गीगाहर्ट्ज आया, फिर A4 आया, A5 आया, इस तरह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।